नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा So I hope आप सब devotees का health स्वास्थ्य अच्छा हो and all of you are nicely practicing Krishna consciousness. Nectar of instruction. Nectar means something which gives life, and poison means something which you know takes life. Takes life. So nectar of instruction wants to give us the nectar which will help us to live eternally. That is to go back home, back to Godhead. And the obstacles that might come in between that path that are described in the verses, and we are reading on the first verse. So open it. Krishna 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 Krishna. Okay. Hare Krishna. My screen's got stuck, devotees. Maybe Shall I share? yes. I don't know why my laptop's even not responding. Okay, now I think it's coming back. Or Krishna Krishna. Whenever you try to do something nice for Krishna, something happens. Okay, okay. I think we are seeing the screen now. Okay, that's good. ठीक है. So where till last where did have been going? कहाँ तक पढ़ लिया है हमने? Anyone has an idea or anyone remembers? Okay, very good. हमने पढ़ लिया था वाचो वेगम. We discussed in the purport and we discussed is manasa vegam also, and we were discussing on the anger also, है ना? Trinada pishu nichena. We discussed krodh vegam also. Okay, devotees. So today we have to discuss jiva vegam from this next paragraph as for the urges of the tongue. So please bring something to write with you. Always write something. If you want to remember in today's meeting, and whatever you want to remember, then write something. Okay. मेरे साथ पेन और कॉपी रखिएगा. ओके. मे बी यू कैन स्क्रीन आप ऊपर कर सकते हैं पैराग्राफ. हमने इस पैराग्राफ से पढ़ना है. एज फॉर द अर्जेस ऑफ द टंग. मीन्स नेक्स्ट पैराग्राफ नीचे वाला. यस. ओके. So, okay, yes, someone read this. Yes, Prabhu, go Hare on. Krishna. As the urge, as for the urges of the tongue, we all experience that the tongue wants to eat palatable dishes. Generally, we should not allow the tongue to eat according to its choice, but should control the tongue by supplying prasad. The devotee's attitude is that he will eat only which Krishna gives him prasad.
That is why to control the urge of the tongue, one should take prasad at scheduled times and should not eat in restaurant or sweet meal shop simply to satisfy the whims of tongue or belly. If we stuck to the principle of taking only prasad, the urges of the belly and tongue can be controlled. Yes, this is very important, devotees. If we want to progress in spiritual life, then we must control the tongue by taking prasad. This is, and this line is very important also, that the devotee's attitude. इस बुक की स्टार्टिंग में हमने एक एटीट्यूड के ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, किसी को याद है क्या थी वो लाइन? Some has any one of you written down that line? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, प्रीफेस में हमने पढ़ी थी. Anyone remembers? That's why I tell you, write something. No, हमने प्रीफेस में पढ़ा था on the attitude. No one has written. All of you should write. Inaudible Sunisha. No, not in this verse. Before starting act of instruction. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Prabhu. Advancement in Krishna Very good. consciousness depend upon the attitude. Very good. Very good, Rahul Prabhu. Hari bol. Hari bol. Attitude. Yes, devotees. Advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. Preface, nectar of instruction. If you want to advance in Krishna consciousness, it depends on what attitude you do bhakti, not just only the actions of bhakti, the the service that you get, but what attitude which you do. And here Prabhupada is directly giving the attitude through which we should control the tongue. We should supply the tongue with prasad. The devotee's attitude is that he will eat only when Krishna gives him prasad. That means he offers everything to Krishna. Prabhupada said if you do two things in Krishna consciousness, that is if you chant Hare Krishna, and if second thing is if you take Krishna Prasad, then you will go back home, back to Godhead. Know for sure if you simply do the two things. So we should take Prasad. जितना ज्यादा प्रसाद हो लीजिए, जितना ज्यादा हो सके प्रसाद, भगवान को भोग लगाइए, तुलसी पत्र डाल के प्रे करके भगवान से जल्दी से प्रसाद खाइए. प्रसाद जितना खाएंगे और जितना आप भगवान का नाम लेंगे, उतना ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ेंगे. क्योंकि सेवा की शुरुआत ही होती है सेवोन मुखे ही जिह्वादौ. जीवा से शुरुआत होती है सेवा की, टंग से. ओके, यस, नेक्स्ट. Amandeep Prabhu, you can read next paragraph. Okay, Hare Krishna. Amandeep Prabhu, are you there? Okay, Rahul Prabhu, you can read the next paragraph. In, in a similar manner, the urges of the Prabhuji, shall I read? Hare Krishna. Is there some lag? Internet lag? राहुल प्रभु आप कंटिन्यू करिए, देन नेक्स्ट अमनदीप प्रभु आप पढ़िएगा नेक्स्ट पैराग्राफ. Yes, go on, devotees. Continue, Rahul Prabhu. Okay. Krishna Krishna. Okay, अमनदीप प्रभु आप पढ़ दीजिए फिर. हरे कृष्णा. In a similar manner, the Prabhuji यही पैराग्राफ हाँ था ना? यही है. Continue. In a similar manner, the urges of the genitals. Prabhuji में अब मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, आ रही है प्रभु. Continue. जी. In the similar manner, the urges of genitals, the sex impulse, can be controlled when not used unnecessarily. The genitals should be used to beget a Krishna conscious child. Otherwise, they should not be used.
The Krishna consciousness movement encourages marriage not for the satisfaction of genitals, but for the begetting of Krishna conscious Yes, child. actually, this is the As present soon, situation of the whole world. The whole world has only two desires. One desire is they love money, and the second desire is they want a woman's genitals. And that's why, so called in the name of marriage, it's just an exploitation. Everyone is looking for only these two things, that is, to earn money and how to get a woman's genitals. And that's why this Krishna consciousness movement encourages marriage not for satisfaction of genitals but for begetting Krishna conscious children. Yes, Prabhupada is so wonderfully highlighting here. ये है गृहस्थ आश्रम में जाने का purpose. And if someone can make produce Krishna conscious children, then he should even think of, okay, I should then join Grihastha. If you think I can't even be myself Krishna conscious properly, then how I can raise Krishna conscious children? Someone asked Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur that your father was a Grihastha. Bhakti Vinod Thakur was a Grihastha. Why you didn't marry? All of the brothers of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, they were also married. Why you were a sannyasi? Bhakti Siddhanta Saraswati said a very beautiful statement. उन्होंने कहा कि if I could produce Krishna conscious children, I would have married 100 times, but I cannot do so. Simply. Yes, read next through. Next lines. um, as soon as the children are little grown, they are sent to our Gurukula school, where they are trained to become fully Krishna conscious devotees. Many such Krishna conscious children are required, and one who is capable of bringing forth Krishna conscious offspring is allowed to utilize his genitals. Yes. So Prabhupada बहुत अच्छा word दे रहे हैं क्या? Capable, जो सक्षम है जी, उनके लिए कि वो ठीक है गृहस्थ में जाएं एंड कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन प्रोड्यूस करें. So just it's like no, okay, if I am capable or not, isn't it? Prabhupada said that if I, अब कोई सोचते हैं कि प्रभुपाद ने तो शादी की थी, but Prabhupada, you know what Prabhupada said when after he met his spiritual master, he said कि uh, if I would have met my spiritual master earlier, I would have immediately joined him. But my misfortune is that I am married, I have responsibilities. So leaving now will not be justice. But if we have choice, then definitely none of us are married. So we should think, okay, how we can dedicate life. If we are capable, then we should move, okay, in that path, because that path also leads back to Godhead. It's not that, okay, brahmachari ashram only leads to back to Godhead. Grihastha ashram it doesn't lead to the path to back to Godhead. No, it's also there. But the thing is, who is capable to walk on that path? That is actually the qualification. Who is capable? Because in grihastha you don't get time to serve Krishna, you just get time to fulfill the responsibilities. And you can see your parents, means how much they have to invest time in so many things. And even children should not utilize his genitals, just like today the youth, young people, they just use their genitals for some nefarious activities. They are using genitals for masturbation and so many impure activities. But it's not this, because it's not like this, okay, someone can do sinful activities simultaneously practice Krishna consciousness. You cannot be material conscious and Krishna conscious at the same time. You have to be Krishna conscious. And Krishna conscious होने का मतलब है अपना विजन फिक्स रखना, अपने विजन में फिक्स रखना कि मैंने यूज करना कैसे जेनेटल्स का, है ना. So we should not use our genitals
स्पेशली जो वीर्य होता है, दैट इज वेरी सेक्रेड। 1000 ड्रॉप्स की ब्लड के बाद एक ड्रॉप बनता है जो वीर्य होता है, और वो एक ड्रॉप अगर कोई जस्ट स्पिल आउट कर दे फॉर जस्ट सम प्लेजर इन द माइंड, लस्ट इज प्लेजर, लस्ट इज ओनली इन द माइंड, लस्ट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लस्ट इज इन माइंड ओनली। सो इट्स जस्ट सो वेस्ट। और वही अगर वीर कोई सेव करता है उस सीमन को, तो वो सीमन हमारी बॉडी में ऊपर जाता है, एंड इट हेल्प्स इन एडवांसिंग अवर मेमोरी in brain when it goes to upper part, so it helps to advance our memory. Okay, yes, Rahul Prabhu, you can read the next paragraph. When one is fully participated in the methods of Krishna conscious control, he can become qualified to be a bona fide spiritual master. Yes, to continue. In this Anubhuti explanation of Upadeshamrit, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Okay, Thakur so before that, so what is the meaning of methods of Krishna conscious control? Yes, devotees, what is the meaning of, in the above line, what is the meaning of methods of Krishna conscious control? Yes, answer, please, devotees. all the six methods Vasu Vega control. Very good, very good. Other devotees, you can also unmute. It's not कि आप बोल नहीं सकते. Don't be formal. आप बताइए. It's not, there is nothing wrong here, and I'm not going to scold anyone also. It's just is to just you check your attentiveness. Are you attentive here or not? Okay, yes, continue, Prabhu. Next reading next. Uh, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes that our material identification creates three kinds of urges: the urge to speak, the urge or demands of the mind, and the demands of the body. When a living entity falls victim these three types of urges, his life becomes inauspicious. One who practices resisting these demands or urges is called tapasvi, or one who practices austerities. By such tapasya, one can overcome victimization by the material energy, the external potency of the Supreme Personality of Godhead. Yes. So हमें बोलने का जो अर्ज है, वेग है बोलने का, कि मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं। और दूसरा वेग है हमारा क्या? मन के वेग। मन कह रहा है ये कर लो, मन कह रहा है सो जाओ, मन कह रहा है कि सुबह उठने की क्या जरूरत है, मन कह रहा है चैंटिंग करने की क्या जरूरत है। और मन, और जो बॉडी के वेग हैं, बॉडी के वेग का मतलब ये नहीं है कि हम खाएं ना, पिए ना, हम अपनी बॉडी का टेक केयर ना करें। हमें हेल्थ का टेक केयर करना चाहिए, पर बॉडी के अननेसेसरी डिमांड्स को इग्नोर करना चाहिए। कि ओके, जब मुझे पता है कि मैं ठीक है खिचड़ी खा सकता हूँ, तो फिर मैं बाहर से क्यों कुछ खाऊं? जब मुझे पता है घर में कुछ बना है खाना, तो मैं बाहर से क्यों खाऊं? जब मुझे पता है कि थोड़े से में भी मेरा हो जाएगा, तो फिर मैं एक अननेसेसरी डिमांड क्यों क्रिएट करूं बॉडी के लिए? जब मुझे पता है कि मैं सिंपल क्लोथ्स भी पहन सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों लेविश क्लोथ्स पहनूं जस्ट टू शो ऑफ, यू नो? सो इन तरीके से हमें देखना चाहिए कि कैसे ये, अगर हमें मटेरियल एनर्जी से बचना है, इफ मटेरियल एनर्जी के हमें जो ट्रैप से बचना है, विक्टिमाइजेशन, अगर हम विक्टिम नहीं बनना चाहते, तो हमें इन अर्जिस पे ध्यान देना चाहिए। और ये तीन ही मेन अर्जिस हैं एक्चुअली। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसको समराइज कर रहे हैं और ज्यादा कंडेंस कर रहे हैं कि तीन मेन अर्जिस हैं: मन का वेग, और बोलने का वेग, वाच यानी वाच का वेग, और शरीर का वेग। शरीर के वेग में क्या आ गया? आपके जेनाइटल्स का वेग हो गया, ठीक है, और बैली का वेग हो गया, इन्हीं में आ गया। तो ये अनुवृत्ति कमेंट्री है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उपदेशामृत पे, उसमें उन्होंने ऐसे स्टैक किया है। भक्ति सिद्ध उपदेशामृत के ऊपर 3 कमेंट्रीज दी गई हैं, ठीक है। एक तो भक्ति विनोद ठाकुर ने दी थी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दी थी कमेंट्री, उसका नाम है अनुवृत्ति, और हमारे शिल प्रभुपाल जी ने जो कमेंट्री दी है, पर्पर्ट्स दी है। यस, नेक्स्ट अभिनव प्रभु, आप पढ़ दीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ।
When we refer to urge of speech, we refer to useless talking, such as that of impersonal Mayavadi philosophers or of personnel engaged in fruitive activities, technically called karmakand, or of materialistic people who simply want to enjoy life without restriction. All such talks or literature are practical exhibition of urge to speak. Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books, and all this is a result of urge to speak. सी भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का कितना अलग विजन है. ही इज सेइंग कि वाच का वेग सिर्फ ऐसा नहीं है आपस में पॉलिटिक्स की चर्चा करना, आपस में कंट्री का डेवलपमेंट. प्रभु जी आपको नहीं पता उस कंट्री में ये चल रहा है, ओके प्रभु जी आपको ये नहीं पता. तो कई बार डिवोटीज भी ऐसे आपस में कर रहे हैं, गुड. उसी तरह बट भक्ति सिद्धांत से ठाकुर से कि इवन writing nonsense books, fiction books, volumes, many novels, people read so many things. तो ये मार्केट में क्यों है ये एक्चुअली? बिकॉज पीपल हैव एन अर्ज टू स्पीक and they are controlled by this urge. That's why they are writing useless books only. They are writing fiction. They are making, why they are making interstellar or movies which are not true. Why they are making? They are making just because they have an urge to express their thoughts, to speak. They want to they have an urge to speak, urge of mind, and they are controlled by that. So that requires, to control that requires some tapasya. One should overcome victimization. That's a good word. Yes, Prabhu, read next. To counteract this tendency, we have to divert our talking to the subject of Krishna. This is explained in Srimad Bhagavatam. Those words which do not describe the glories of Lord, which alone can sanctify the atmosphere of whole world universe, are considered by 70% to be like unto a place pilgrimage or clothes, since the all perfect persons or inhabitants of transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Yes. तो इसीलिए वाच को वेग के हमें क्या डिस्कस करना चाहिए? हमें डिस्कस करना चाहिए भगवान की ग्लोरीज के बारे में. हमें डिस्कस करना चाहिए स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर, या हमें स्पिरिचुअल टॉपिक्स से कनेक्ट करना चाहिए चीजों को. लाइक प्रभुपाद स्टार्टेड द मैगजीन बैक टू गॉड हेड, और उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स से कि कैसे लोगों के अंदर देर इज अ डिजायर. जैसे भगवद गीता कह रही है, द लस्ट ग्रीड एंड एंगर दे क्रिएट हैवॉक इन द सोसाइटी. सो देर इज अ ग्रीड इन पीपल. दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग सो मेनी वेपन्स, एटम बॉम्ब्स. और उस समय जब प्रभुपाद जी थे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी. सो इट वाज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीड. सो ऐसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करना, कनेक्ट करना, एक्चुअली दिस इज द वे टू कंट्रोल द अर्ज टू स्पीक. Even in day to day life we can connect, how we can connect it to Bhagavad Gita, connect to spirituality. और what is just thing is कि ना अपना विजन चेंज करना है हमें. विजन, दृष्टि चेंज करनी है. दृष्टि, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन. भक्ति इज नॉट अबाउट कि ओके यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंड द मोर इन्फॉर्मेशन आप भक्ति से रिलेटेड आप अपने हेड में भर सकते हैं, उतना ज्यादा आप भक्ति में अपने आप अर्जिस को कंट्रोल कर पाएंगे. बट भक्ति में क्या है कि जितने ज्यादा आप दृष्टि बदल सकते हैं चीजों को देखने की ना, उस दृष्टि से आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे. इन्फॉर्मेशन फिर अपने आप ऑटोमेटिकली यू विल नो हाउ टू, which information is required and which is not. Okay, just like example अगर मैं दूं आपको, तो मोबाइल फोन है ना. सो मोबाइल फोन को अगर कोई देखे तो सिंपली ओके इसमें मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा, यूट्यूब चलाऊंगा, मैसेज आया या फिर क्या. सो कोई भी देख सकते हैं कुछ भी चलाने को लेके मोबाइल को, है ना. मोबाइल इज ऑब्जेक्ट फॉर माई यूज, कोई ऐसे देख सकता है. बट अगर दृष्टि अगर आपकी भक्ति में है, ओके यू वांट टू यूज इट इन कृष्णा सर्विस, सो यू विल नो विच थिंग्स टू यूज एंड विच थिंग नॉट टू यूज. You will know this is not time for just going on mobile and doing anything I like or I want. It is time for me कि मुझे अभी क्या रिक्वायर्ड है जो करना चाहिए. मे बी मुझे मेरी चैंटिंग नहीं हुई तो मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए, और या फिर मुझे अभी मेरी सेवा बची हुई है तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए. थिंग इज दृष्टि बदलने के लिए, ठीक है.
we, and there are many times we want to talk about Krishna while he, अच्छा लगता है हमें कि वो हमें कृष्णा के बारे में बात करने का मौका मिलेगा कि हम आपस में, मतलब हम, अगर हम भी कोई यहाँ बिठा दे, मतलब हमें व्यास आसन पे बिठा दे तो हम कृष्णा के बारे में बात करेंगे। बट क्या व्यास आसन से नीचे उतरने के बाद हम कृष्णा के बारे में बात करते हैं? दैट इज एक्चुअली अ टेस्ट। माइक के सामने कीर्तन करने में हमें, ठीक है हम कर लेंगे, वी विल डू इट, वी कैन डू इट, बट क्या हम अकेले बैठ के करना चाहते हैं कीर्तन? दैट इज अ टेस्ट। Maybe many people are in the temple and we are dancing for Krishna. But if it is genuine, then are we dancing for Krishna when we are alone? That means some way there is a desire, okay, I am also wanting to show my Krishna consciousness to others. That's what it matters. But if it matters only for doing serving Krishna, then we should also do it alone. Then we can call each other, oh Prabhu, I want to discuss with you today, I learned something. Prabhu, I want to share something with you, reflection about Krishna. I want to, oh Prabhu, can you help me to remember this verse? We don't do that actually. That means we are just going on a formal path कि करना है, मीटिंग है, इंफॉर्मेशन है, कर रहे हैं, somehow मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेंटेन रहना है, या मे बी शो करना है, मे बी एनीथिंग। बट इफ इट इज अ जेन्युइन देन ओके, ओके देन फिर मुझे रियली डिजायर है जानने के बारे में, ओ आपकी चैंटिंग कैसे इम्प्रूव हुई। We don't ask these questions, but we just want, or we just go on the wrong way. Yeah, that's why it is taking time for us to even come to 16 rounds, or we are not able to properly chant 16 rounds only because somewhere we are just diverting ourselves, you know. So that's why Prabhupada is saying in this line, we we have to divert our talking to the subject of Krishna. Very good line. We have to divert our talking to subject of Krishna. ठीक है, ओके। नीचे आप कर सकते हैं प्रभु, अभिषेक प्रभु। हरि, ये सबकी आवाज काफी धीरे आ रही है। आपकी आवाज प्रभु जी क्लियर नहीं आ रही है एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, यस प्रभु। पर्सपेक्टिव, दृष्टि, दृष्टि मतलब जो भी आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे मीटिंग में, या फिर आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आप अप्लाई भी करें, वो पर्सपेक्टिव तब चेंज होगा, आपका दृष्टि तभी चेंज होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद होगा, अगर आप पहले दिन मैथ्स में कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेट्स से ज्योमेट्री, ठीक है, सो इट्स नॉट क्लियर, आपने पढ़ लिया एंड इट्स नॉट क्लियर, बट जब तक आप उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं कर लेते थे, जब तक आप उस पर थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते थे, और जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते थे, तब तक वो आपको उतना क्लियर नहीं होता। तो थिंग इज, परफेक्टिव चेंज करने के लिए हम जो पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, स्टीव जॉब्स हैड अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग, इन माय होल लाइफ आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। So we should try to connect everything, ki how it is related. You know, I showed you a spiral diagram, all of you devotees, ki how the spiritual knowledge is to connect everything to Krishna. It's not just like to go on collecting information. So maybe then फिर जब हम question answers करें तो हम इसको और elaborately कर सकते हैं। ठीक है, so any of you have more questions, you can write in that Excel sheet, questions में आप भर सकते हैं। ठीक है, yes, next आप इसको scroll कर सकते हैं प्रभु, you can, Krishna Krishna. Okay, on the other hand, that literature which is full of the description of transcendental glories of the name, the fame, the forms, the pastimes, etc. That's, ये चार चीजें हमें पता ही नहीं है एक्चुअली, और इन चार चीजों के बारे में हम पूछते ही नहीं है एक्चुअली, ये भी हमारी डिजीज है। We don't ask about the name of Krishna, or what are the qualities, what fame means, qualities, fame means why Krishna is famous for his qualities, and the forms,
The pastimes etc of the unlimited supreme lord is a different creation. तो भगवान तो वो लिटरेचर जो इस बारे में डिस्क्राइब करती हैं वो एक अलग क्रिएशन है, full of the transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. What is the purpose of these books? Prabhupada said always, these books are meant to bring revolution in everyone's lives. That means in our lives also. हमारी life में revolution. Revolution means kranti. Revolution doesn't mean okay information. Revolution means kranti. So it's a good word that these books, this knowledge, Bhagavatam is meant to bring revolution in our life. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, हो सकता है आपको लगे प्रभु जी यहाँ वर्ड मीनिंग गलत दिया है, प्रभु जी ये वर्ड गलत यूज लग रहा है, शायद ग्रामेटिकल मिस्टेक है. Even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. Who are thoroughly honest. They will appreciate Bhagavad Gita, those who are thoroughly honest. They will not just say, okay, I will appreciate Radha Krishna Leela. They will appreciate the first chapter of Bhagavad Gita, Sanya Darshan. Prabhupada says ki it is not that Krishna's Leela in Vrindavan is transcendental and Krishna's speaking of Bhagavad Gita in the first chapter at Kurukshetra is not transcendental. Both are transcendental. So devotee reads both. You know? That's why we read Krishna book also, and we are reading Nectar of Instruction also. The Nectar of Instruction is giving us the instructions to become disciplined in spiritual life, and the Krishna book is helping us to relish those discipline, to relish the object of discipline, Krishna himself. Okay. The conclusion is that only when we talk about devotional service to the Supreme Personality of Godhead can we refrain from useless nonsensical talk. We should always endeavor to use our speaking power solely for the purpose of realizing Krishna consciousness. Prabhupada says if we don't do that, actually we are like crows. Crows कैसे करते हैं? काय काय काय. And no one likes the sound of crows. Everyone likes the sound of kokila bird because it's like a sweet song. Similarly, if our talks are not ultimately coming to Krishna consciousness, to spirituality, then it's like croaking of the frogs. वाचो वेगम में आया था ये एग्जाम्पल, like croaking of the frogs, Mayavadi philosophers speaking. They are just inviting death. So the next devotees, इसको scroll down कर सकते हैं अभिषेक प्रभु आप? Yes. Okay. Yes, Rajat Prabhu, you can read the next paragraph. As for the agitation of the filtering mind, they are divided into two divisions. The first called avirodhriti or unrestricted attachment, and the other is called virod yukta krodha, anger arising from frustration. Actually this first line is very important. अगर हमें माइंड को कंट्रोल करने के बारे में ट्राई करना है कि हम माइंड कंट्रोल कर सकें, कंट्रोल मीन्स उसको अननेसेसरी अवॉइड कर सकें माइंड के एजिटेशंस को, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मन कैसे हमें घुमा कैसे रहा है मन. सो एक तो हमें अविरोध प्रीति से घुमा रहा है मन. अविरोध प्रीति का मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, यानी बिना किसी भी अनरिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी भी बैरियर के आसक्ति बनाए रखना किसी चीज से. और दूसरा क्या है? विरोध युक्त क्रोध, anger arising from frustration. Yes, Prabhu, continue. Adherence to the philosophy of Mayavadis, belief in the fruitive results of the Karmavadis, and belief in plans based on materialistic desires are called avirodh priti. Gyanis, karmis, and materialistic plan makers generally attract the attention of conditioned souls. But when the materialistic cannot fulfill their plans and when their devices are frustrated, they become angry. Frustration of material desires produces anger.
यस, सो इट इज ट्रू। अविरोध प्रीति का मतलब है बिना किसी विरोध के प्रीति बनाए रखना। जैसे पीपल डोंट हेजिटेट टू इवन ड्रिंक वाइन। इफ यू जस्ट गो ऑन, just take a ride in a city, you will find in every after every 10 meters in main metropolitan cities there is a wine shop, or there is, any opportunity which will give you sense gratification. So karmvadis, this is what scriptures are saying. People are karmvadis. Why? Because their mind is just following unrestricted attachment for sense gratification. So this is the way, the first way where mind, how mind makes us agitate for sense gratification. The next way, okay, someone may say, okay, I will not eat like this, I will not drink, or I will not say. Then what he will do? Then he will say, but I'm doing nothing, मैं तो कुछ नहीं कर रहा. Oh, he's eating so nice things, I am eating maybe not nice, I am eating offered food, I am taking much time. Oh, he's, I think enjoying life, I am not enjoying life. Then mind becomes frustrated. I think in Krishna consciousness there needs to be little bit, चार नियम में शायद इतने भी नहीं करना चाहिए, कुछ नियम छोड़ देने चाहिए. Like Prabhupada के time पे they asked Prabhupada, Prabhupada, is it possible for us that we can leave the fourth regulative principle in America? Because it's usually there. They asked Prabhupada, can we leave the fourth regulative principles? That is no illicit sex. Prabhupada said, no, no, you cannot. You have to follow the four regulative principles, because Prabhupada is having compassion on them. They don't know. Prabhupada knows this is actually that will make them frustrated in the life. First, it will attract them, avirodh priti, it will attract them to enjoy, and then after they are done with enjoyment, they will be frustrated. This didn't work out. Maybe let me try something else to enjoy. So it's actually the compassion of the scriptures. They are giving us this knowledge. Don't be controlled by the mind, because it will, at the end, it will make you angry. See the last line. Frustration of material desires produces anger. That is विरोध युक्त क्रोध. तो अगर आप जबरदस्ती भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा, और अगर आप सोचोगे कि मैं कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, तो देन आप भी अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग miseries, sufferings. Ultimately material enjoyment leads to impious reactions, which they get in sufferings. Why the people are, getting sufferings like these today? We are having diseases, SMA, or many diseases. We are having diseases. Why? Because of virodh priti, they are unrestrictedly enjoying. कोई restriction नहीं enjoy करने का. Why America has most number of dogs? Because people are very much attached to dogs there. Dogs को लेके हाथ में ऐसे चिकू चिकू कुची कुचिकू. They love dogs, they take the dogs, and they are attached to dogs. What do you think in the next life they will be born? That's why America has most number of dogs. Yes. Okay. Arshdeep Prabhu, can you read the next paragraph? जी प्रभु जी. Prabhuji, After the time next नहीं हो रहा paragraph, आज? yes, after the next paragraph, we will end. Okay. Similarly, the demands of the body can be divided into three categories: the demands of the tongue, the belly, and the genitals. One may observe that these three senses are physically situated in a straight line as far as the body is concerned, and that the bodily demands begin with the tongue. If one can restrain the demands of the tongue by limiting its activities to the eating of prasad, the urges of the belly and the genitals can automatically be controlled. अगर In किसी this को प्रॉब्लम होती हो कि ओके मुझे बहुत भूख लगती है, या फिर मेरे जेनिटल्स मुझसे कंट्रोल नहीं होते हैं, प्रभुपाद से जस्ट सिंपली ईट प्रसाद. बाय लिमिटिंग इट्स एक्टिविटी टू द ईटिंग ऑफ प्रसाद, ऑटोमेटिकली जो जो पेट का वेग है, बेली का, और जेनिटल्स का वेग है, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. यू कैन सी ऑल्सो हमारी जीभ और हमारा जो बेली है और हमारे जेनिटल्स हैं, ये एक लाइन में है, और इस ये एक लाइन में है. तो अगर आप ऊपर से प्रसाद डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे कंट्रोल हो जाते हैं. इन दिस कनेक्शन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सेज दिस ब्यूटीफुल प्रेयर जो हम पढ़ते हैं प्रसाद पाने से पहले.
एक पैराग्राफ और नीचे कर सकते हैं अभिषेक प्रभु. O Lord, this material body is a lump of ignorance. Senses are a network of paths leading to death. Somehow or other, we have fallen into the ocean of material sense enjoyment. And of all the senses, the tongue is the most ferocious and the uncontrollable. It is very difficult to conquer the tongue in this world. But you, dear Krishna, are very kind to us. You have sent this nice prasad to help us conquer the tongue. Therefore, let us take this prasad to our full satisfaction and glorify your lordships, Sri Sri Radha and Krishna, and in love call for the help of Lord Chaitanya and Prabhu Nityananda. So, अर्जिस जहां भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बात कर रहे थे थ्री अर्जिस के बारे में, अर्ज टू स्पीक, अर्ज ऑफ द माइंड और अर्ज ऑफ द बॉडी. तो अर्ज ऑफ द बॉडी में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी प्रसाद लेना चाहिए. एंड हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसको. इट्स बेसिकली आई थिंक ओके नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच. प्लीज अब हरे कृष्णा. वेरोशियस मीन्स बहुत ही पावरफुल होता है ना, जो कहते हैं वोरेशियस. यस यू नो लाइक जैसे राक्षस, जैसे जाइंट कोई चीज होती है ना, तो कहते हैं ये कितना ज्यादा भयानक है, वोरेशियस. सो इट्स लाइक वोरेशियस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, वेरी मच डेंजरस. सो ड्यूटीज एक्सेल शीट पे प्लीज फिल करिएगा. टेक 1 मिनट 2 मिनट, जस्ट फिल योर थिंग्स, स्पेशली दी अटेंड, आपका आपने जो अटेंड की है मीटिंग्स. और स्पेशली साथ में प्लीज अपना फीडबैक भी भरिएगा, कमेंट्स या इंस्पिरेशंस, आपको क्या इंस्पिरेशंस मिल रहा है, सो दैट वी कैन, so that maybe it can help you yourself, because it's just to help yourself only. Because at the end of the week, just see what you have learned in your inspiration section. अब देखिए कि आपने ओके मैंने ये अटेंड किया था, ये मेरा इंस्पिरेशन रहा, मुझे ये सीखा मिली. ओके सो यू कैन रिफ्लेक्ट बैक. आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर ना, यू कैन रिफ्लेक्ट बैक. So you can reflect back by seeing what you have been getting the inspirations. So it's very important. Please fill करिएगा उसे. Okay. Thank you so much. Especially these meetings, I learned from so many things by getting all of your association. Thank you so much, devotees. Vancha kalpataruvascha kripasindhuvascha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. Anand koti vaishnavin ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Rup Goswami Prabhupada ki jai, Updeshamrit ki jai. Hare Krishna. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं devotees. Thank you very much.